हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे थे AKTU 22-23 का, है ना। यहाँ तक हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। अब हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ये क्वेश्चन है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, राइट। पार्शियल डिफरेंशिएशन का और इम्प्लीसिट फंक्शन, है ना। इम्प्लीसिट फंक्शंस को कैसे करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम फ्री, है ना। फ्री का क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं सोल्व। आप लोगों को पता है, आपको गिवन है, क्या गिवन है कि जेड किसका फंक्शन है, किसका फंक्शन है जेड, एक्स और वाई का। एक्स और वाई किसके फंक्शन है, यू और वी के, राइट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जेड से एक्स, आपको यू तक जाना है, जेड से यू तक जाना है। कितने वे हैं आप लोगों के पास, टू वेज है, राइट। टू वेज कैसे, डेल जेड ओवर डेल एक्स इंटू डेल जेड ओवर डेल यू प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई इंटू डेल वाई ओवर डेल यू। ये तो आपके यू तक जाने के वे होगी। आपको वी तक जाना है, वी तक जाने के कितने तरीके हैं, दो, डेल जेड ओवर डेल एक्स ओवर डेल वी एंड सिमिलर वे डेल जेड ओवर डेल वाई इंटू डेल वाई ओवर डेल। ये आप लोगों को याद रखना है, राइट। इसी से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर वे में लिखिए गिवन दैट, जो भी आपको गिवन है उसको आप रीराइट कर लीजिए। चलिए, ये है आपका z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। x इज इक्वल टू e रेज टू पावर u प्लस e रेज टू पावर माइनस v and y is equal to e raised to power minus u minus e raised to power v. Then we calculating and find del z over del u and del z over del u. Now applying chain rule. By this, z is the function of, again, del z over del u. क्या बनेगा, del z over del u, del z over del x over del u, del z over del x into del x over del u प्लस दूसरा वे भी है डेल जेड ओवर डेल वाई, डेल जेड ओवर डेल यू, डेल जेड ओवर डेल वाई इंटू डेल वाई ओवर डेल यू. Now putting the value of del x over del u, del z over del x into del over del u, putting the value of x, e raised to power x plus e raised to power minus v plus del z over del v into del over del u. y is e raised to power minus u minus e raised to power v. This ये बन गया del z over del u. This implies del z over del u is equal to del z over del x into e raised to power u plus 0, right, plus del z over del y into minus e raised to power minus u minus 0. This implies del z over del u is equal to e raised to power u del z over del x minus e raised to power minus u del z over del y. That is equation number first. Now
finding the second derivative del z over del v. Similar way में del z over del v, del z over del v, del z over del x over del v, del z over del x into del x over del v plus del z over del y into del y over del v. Now putting the values del z over del x, del z over del v, del over del v, putting the value of x e raised to power u plus e raised to power minus v plus del z over del y, del over del v. What is the value of y? E raised to power minus u minus e raised to power v. This implies del z over del v is equal to del z over del x into 0 negative e raised to power minus v plus del z over del y 0 minus e raised to power v. This implies del z over del v is equal to negative e raised to power minus v del z over del x negative e raised to power v del z over del y. That this is our second equation. Now from the proof del z over del u and del z over del v, इसकी वैल्यूज निकाल लीजिए. इसकी वैल्यूज कैसे निकलेंगे? फ्रॉम 1 minus 2 implies that del z over del u minus del z over del v is equal to, what is del z over del u? E raised to power u del z over del x minus e raised to power minus u del z over del y minus e raised to power minus v del z over del x minus e raised to power v del z over del y. Right? Now solving equals to e raised to power u del z over del x minus e raised to power minus u del z over del y plus e raised to power minus v del z over del x plus e raised to power v del z over del y. Now collect the same terms, this e raised to power u plus e raised to power minus v into del z over del x minus e raised to power minus u, negative बाहर ले लिया, negative e raised to power v into del z over del y. You will see this value and this value is x and this value is v, this value is y according to given problem, this x and this y, right? So this implies del z over del u minus del z over del v is equal to x del z over del x minus y del z over del y. यही आपको प्रूफ करना है, राइट? Hence proved. So students,
आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।